कुछ हाइपो मतलब लेस, मतलब salt. So when I say hypotonic solution means less salt, so it has more water. Okay, hypertonic, more salt means less water. So when I place anything in a hypotonic solution, what will happen? Less salt, more water. The cell would swell. Okay, hypertonic, the cell would shrink. When I say isotonic, concentration across the cell, cell के अंदर, cell के बाहर would be same. So isotonic. When the water enters into a cell, endo. When the water leaves the cell, exo. So when I place a cell in a hypotonic solution, what will happen in the cell? The water will enter, so it is endosome. So if I place a cell in a hypertonic solution, what will happen? The water will be withdrawn from the cell, so it is exhausted. And in isotonic, no osmosis. What's an endocytosis? And present endocytosis, when a particle is engulfed by a cell. Okay, so any foreign particle, germ, whatever is ingested by a cell, then that is known as endocytosis. Endo means inside, cyto means cell. So engulfing of a foreign particle by a cell is endocytosis. Example, your WBC is engulf foreign particle bacteria, so it is engulfing endocytosis. Clear? Mitosis और meiosis है ही नहीं आपको तो. कौन से चैप्टर में? इतने सालों में तो अभी नया डाल देगा तो पता नहीं. चलो हाँ बोलो. चालू कर. Okay, you are newcomer, I guess. Okay, what you are supposed to be taught? Mitosis and meiosis. Is it detailed for you? I don't think so. Phases है? Phases है, madam. Okay, we come to that part, but before that, what have we completed last? We have completed tissues. लिगा अरे हाँ अपना वो आधे घंटे का ही छुआ ना, फुर्सत में मिलता है अपने को क्लास. Okay, ligaments उतना ही हुआ है. So we have completed nervous tissue, muscular tissue, and connective tissue में tendons, ligaments, areolar, adipose. क्या जल्दी बोलो. अपन शायद भूले भटके से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. In that we studied something known as plant tissues and animal tissues. Plant tissues में we studied was meristematic tissues. वो दिख रहा है मार्क्स कितना अच्छा है वो. What is the next one? स्कूल में एग्जाम में है इसीलिए. Permanent tissues. Meristematic tissue further divided into 3 types: apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. Permanent further divided into simple, complex. Simple further divided into protective and supportive. Protective further divided into epidermis, cork. Simple, parenchyma, parenchyma, sclerenchyma. Then we talked about complex tissues.
Xylem, phloem. ऐसे कुछ बकवास पढ़ाया था, अब बोलो ये भी नहीं पढ़ेगा बेचारे. Okay, girls are not paying attention, I guess. Boys को तो पता है पर girls को नहीं पता शायद. Irregular. Then comes animal tissues. Animal tissues में there are 4 types of animal tissues. First, epithelial tissue. Second, connective. Third, muscular tissue. Fourth, nervous tissue. We had gone in reverse order. Easy से लेके complex पे जा रहे थे. So we had already done the nervous tissue, and we also done was in terms of its diagram. Draw किया था. Book open करो और check करो. So here, nervous tissue we already done. Then muscular tissue further divided into 3 types. What we talked about was skeletal muscles, smooth muscles, cardiac muscles. इन तीनों का भी डायग्राम अपन ने ड्रॉ किया था. हाँ, मतलब कुछ वीवीआईपी है ना, आज के दिन आए हैं. ये तो रेगुलर नहीं है, पहली बार ही आई है, पर कुछ तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं पहली बार आ रहे हैं. Then next is connective tissue, further divided into various types. सबसे पहला, अगर मैंने ligament किया है, तो obviously the first one is areolar and adipose. किया था? ठीक है. So there is areolar tissue, adipose tissue. फिर second, ligament and tendon. Next, bone and cartilage. Next, blood, lymph. Book में lymph दिया है? नहीं दिया है. Okay, so I think now shall we start? So we go line wise. What is given here? एक बार revise हो जाएगा. सबसे पहले the connective tissue, the name itself, which connects various organs, parts of the body, referred as connective tissue. It may connect organ to organ, it may connect a tissue to tissue, it may connect various parts of the body. That is why the name as connective tissue. Now this connective tissue has certain characteristics. It has very less amount of matrix, but it has fibers and very few amount of cellular components. So the tissue which is made up of has very less cellular components. In some of the tissue there are fibers present, and the matrix. What is matrix? Anybody? Sir, fibrous in nature and mild in nature. Matrix. Okay. Matrix is nothing but between two cells. So if I take this side as a bench as one cell, this as one cell, between the two there is a binding substance that is known as matrix. So there is abundance of matrix which has very less amount of cellular components. Cellular component means cells, and it has amount of fibers. Now, luckily you don't have detail about fibers. There are 2 types of fibers: yellow fibers, white fibers, or what we say as elastic fibers, etc. So वो सब detail नहीं है आपको. So we have only studying in terms of fibers or in terms of fibrous connective tissue. Now, in your book, table is given and just explanation is given. But if I want to put it in the proper way, then I say as connective tissue is first connective tissue proper. Now, what do you mean by connective tissue proper? If I say there is a four-wheeler, okay, four-wheeler category mein which things come? Car, truck, bus. Truck भी जाएगा, truck जाएगा ही. Okay, then when I say four-wheeler, obviously car is there. Okay, two-wheeler, scooter, bike, cycle.
तो तीनों आते हैं, scooter, bike and two-wheeler cycle partner. The same way, when I say the connective tissue proper, when I say connective tissue, I say it has a matrix, it has a fibers, and it has cellular component. So what definition we talk about, or what we think about cellular part, connective tissue part, that idea is basically more seen in this part. That is why it is known as connective tissue proper. This is the best example. Connective tissue का example देने के लिए. In that there are two types, areolar and adipose tissue. Now what is areolar and adipose tissue? Areolar tissue is present just beneath the skin. आपके skin के नीचे होता है. Adipose tissue also is present beneath the skin. Sometimes it is mixed with the areolar part. So we go first with the areolar tissue. Okay. What is this? Okay. In a small baby, you always करते हो कि नहीं करते? Okay. तुम्हारे में इतना soft है या नहीं है? वो भी नहीं सकता. Okay. साइन किए. Now, as you grow older, firmness is there. बुढ़ापे में क्या? Becomes loose. Okay, wrinkles are there, so it sags. There are wrinkles seen on the skin. The areolar tissue main function is it holds the skin tightly onto the muscles. So it is something like a glue की तरह काम करता है. कितना firm attach करेगा आपकी skin, that is based upon the areolar tissue. So it tightens the skin onto the muscles. In the initial stage, when you are just born, अभी ये develop नहीं हुआ. इससे तो suddenly slightly elasticity is not there. So इसके लिए आप बच्चों को आके cute करते रहते हो. कि वो बच्चा ही cute होता है. Okay, as you grow, okay, वो cuteness का C निकल जाता है. You बचता है ugliness. Okay, so that time it becomes firm. And when you grow again older, what happens? Again, the elasticity is lost because in the older tissues, what happens? The cells are dying. They are not replaced. So the wrinkles are formed. So the tightening or maintaining of the skin texture is basically because of the areolar tissue. Am I clear? Yes. Everybody? Next, adipose tissue. ब्रैकेट में इसको कभी कभार ये भी लिखा जाता है. Fat cells are more in this adipose tissue. Simple language, routine day-to-day language में जिसे अपन चर्बी कहते हैं, जो अपने में कई जन में भर भर के भरी होती है. ये भले दिखने में ऐसे हो, पर भर भर की होती है. That is okay, that the body. Okay. So then adipose tissue. Now, what is the function of adipose tissue? Then it forms, it is mixed with areolar and is forming a protective cushion around each organ of your body. How many of you non-veg over there? और कभी लेने गए हो चिकन खरीदने, काटते वक्त देखा है? Now, when you cut a chicken, etc., chicken or goat, etc., you might see certain organs are there. उसके ऊपर whitish और yellowish color का tissue होता है. आप उसको भैया उसको निकाल देना चर्बी को. That's basically fat. Okay, वैसा slimy रहता है. So we say that to remove that out. Okay, then that is nothing but your adipose tissue surrounding your eyeball, surrounding your heart, surrounding your kidney, surrounding your liver, every organ, there would be this adipose tissue, which is acting as a cushion. जैसे अपन क्रिकेट में हेलमेट पहनते हैं, अंदर हेलमेट के अंदर कुशन होता है, पैड्स में होता है, ग्लव्स में होता है. So all that is nothing but protective cushion. Okay, but there is a problem. Now what is the problem? Then this tissue is present around each organ.
as a cushion in a limited amount. कम है, cushion का काम करता है, अच्छा लगता है. But when we हम ठूस के जो खाते हैं इतना, तो टिश्यू बहुत ज्यादा बन जाता है. So it is in more amount. Heard about this word? Visceral fat सुना है? नहीं. कितने से सुना है? नहीं पता. ओके, सिंपल है. नाइफ लेना है, ऐसा कट कर रहे हैं. ओके, उसके अंदर कितनी चर्बी भरी है? अराउंड ईच ऑर्गन, दैट इज नोन एज विसरल फैट. ओके, कम अमाउंट में है तो ऐसे लिखोगे, भर के तो ऐसे लिखोगे. ओके, वो है थोड़ा हेल्दी है, मैं ओवरवेट. ओके, दैट्स नॉट गुड बिकॉज टू मच ऑफ विसरल फैट. इमेजिन इफ आई टेक वो प्लास्टिक रैप होते हैं उनमें खाना रैप करने के लिए. Okay, I take that wrap it around your face. एक बार ऐसा. नहीं, मैं एक ही बार घुमा रहा हूँ. जल्दी मरोगे? ये मरोगे. Okay, अब मैं उसको 100 बार घुमाता हूँ, पूरा फिल्म खत्म कर दूंगा घुमा रहा हूँ. बाय बाय टाटा. Then what is happening is, first case में there was a suffocation, but इतना नहीं. Still you are trying to survive. Heart, liver, kidney, इनके ऊपर ये tissues है, but it is just a tissue, protective in काम कर रहा है. But the moment it is more in amount, it squeezes the heart, it squeezes the liver, kidney. वो बात की बात है. Okay, but the moment it squeezes, you are feeling like हार्ट प्रॉब्लम्स. आपका हार्ट पंपिंग अफेक्ट होगा, ब्रेथलेसनेस पे होगा, लो बीपी नहीं होगा, हाई बीपी होगा. ये लो बीपी नहीं होता है, हाई बीपी होता है. तो पंपिंग कम हुआ इसका मतलब प्रेशर कम होता है क्या? ये किसने बोला? पानी का नल नहीं है लॉजिक लगा. Okay, so there the blood pressure would increase. So all these are problems associated with the adipose tissue. एक protective in function. Second, it is just present beneath the skin. Again, cushion, and the most important function, it acts as an insulator. आपके स्किन के नीचे पूरा इंसुलेटर काम करता है. It prevents the body from losing heat. In which category do we come? Cold-blooded या warm-blooded? वैसे warm-blooded होता क्या? What is warm-blooded? Hearing for the first time? Okay, so warm-blooded is not garam खून. Okay, मतलब बुढ़ापे में ठंडा खून और जवानी में गरम खून और बचपन में क्या सब खून ही नहीं है. Okay, then when I say warm-blooded, it is related to temperature. Any organism whose temperature remains constant, irrespective of the outer temperature. अगर मैंने यहाँ पे 0 डिग्री डाल दिया तो मेरा 0 डिग्री पे जाएगा क्या बॉडी टेम्परेचर. इफ टुमारो यू गो टू कश्मीर बर्फ हो रहा है, माइनस में गया, तुम्हारा टेम्परेचर माइनस में जाएगा बॉडी का? नहीं. टुमारो आई टेक यू टू प्लेस वेयर वोल्केनो इज इरप्टिंग, जस्ट उसके बाजू में हूँ, टेम्परेचर इज वेरी हाई, 50 के आसपास पहुंच चुका है, तुम्हारा बॉडी 50 पे जाएगा? नो. सो irrespective of the outer temperature, body temperature remains constant. Then we say it as warm blood. There's something known as cold blooded. क्या होगा फिर? अरे होता क्या, मैंने एग्जांपल नहीं पूछा. Good. The body temperature changes as per the outer temperature to a certain T. अब तुम बोलोगे सांप को उठा के फ्रिज में डाल देता हो तो उसका फ्रिज पे 0 डिग्री हो जाएगा. कुछ हद तक वो कर सकता है, पर नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. जैसा अपना बॉडी टेम्परेचर 37 है, इफ आई गो टू कोल्ड प्लेसेस इट विल नॉट कम टू 27, okay, नॉट इवन फॉर 30, okay, वो 37 ही मेंटेन करेगा. तो जो स्नेक इज देयर जो 37 पे है फिलहाल, उसको मैं 20 डिग्री पे लेके जाऊं
तो उसका टेम्परेचर 30-25 तक आ सकता है, उतना फ्लक्चुएट करेगा, 20 पे शायद नहीं जाए. Okay, then they are known as cold blooded. So the adipose tissue also helps to maintain the body temperature. Am I clear? So if you see those who are staying in Europe, US, Europe वगैरह हाइड्रेट होते हैं और अच्छे खासे हेल्दी खाते हैं, तो बिकॉज वहां पे बर्फ ज्यादा ठंडा हुआ होता है, तो दे रिक्वायर्ड बॉडी टेम्परेचर इंसुलेशन बाय बॉडी, सो उनमें फैट्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अस. इज इट क्लियर? Norwegians. तो नॉर्वेजियन बोल रहा है, अभी तो किधर भी हो जाता है. Shall I go ahead? Okay, the two function protective as well as insulator. बोलो. बॉडी में एडिपोस टिश्यू होगा, ऐसा होगा ही पहली बात, because when you eat anything there is some amount of fats in it. Without fats your body itself will not be formed, because भूले भटके से अपन ने सेल में पढ़ा था. What is cell membrane made up of? ये तो सिलेबस में है ना तुम्हारे फर्स्ट एग्जाम के लिए. So what is lipid? Another word? Lipids is fat. तो बिना फैट्स की तरह सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा, और बिना सेल मेम्ब्रेन के खून नहीं बनेगा, या कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा. ये तो देयर विल बी नो लाइफ. ओके, so एवरीथिंग इज गुड टू इट, पर वो लिमिट में होगा तो अच्छा, लिमिट में ये भी होगा तो अच्छा ही माना जाता है ना. ये मतलब है ना, मुझे पता होगा. हाँ यार, समझ आ गया. समझ में आ गया. Then, so fats are obviously required, they are good for our health. पर ज्यादा हो जाता है तब it is not good for us. That is part of adipose tissue. Then comes the next part, is the ligament and tendon. ये आ जाता है something known as fibrous connective tissue, because ये फाइबर से बना होता है, इसलिए fibrous connective tissue. इनमें आते हैं two ligaments and tendon. दो लाइन ही पढ़ने इसमें. What are ligaments? पढ़ के तो कोई भी बोलेगा, पर लिगामेंट किसको ज्वाइन करता, टेंडन किसको ज्वाइन करता. गुड. अ वेरी सिंपल एग्जांपल, इफ आई से लाइक दिस एंड लाइक दिस, ऐसे मेरा हाथ उड़ के जाता है नहीं ना, लास्ट टाइम भी कहा था मैंने, इट्स फील लाइक दिस, सोचा बोन उड़ के नहीं जा रहे. दैट्स बिकॉज ऑफ द लिगामेंट्स. सो लिगामेंट्स हेल्ड टुगेदर टू बोन्स इन देयर पोजीशन. If the ligament burns, then your bone will get dislocated. Okay, किधर भी जाता है. So that is what ligament does. What does tendons do? Connect muscles to bones. ना अब इस पे ध्यान देना. Tendons जो होते हैं, it is connecting muscles to the bone. हम bone fix है. Okay. मसल्स अटैच करना उसको. There is a group of muscles, सपोज मान लो ये मसल्स है ना. अगर मसल डायरेक्टली अटैच हो गए बोन के, घर पे कपड़े सुखाते हो, हाँ या ना, रॉड या थ्रेड. ओके, थ्रेड पे डालने के बाद इज दैट थ्रेड बिकमिंग लूज? सर एकदम टाइट बांध के रखा, एक महीने के बाद वापस कोई फिर टाइट करते हो, फिर वापस 15 दिन के बाद नीचे जा रहा है, फिर वो कितना भी टाइट करो वो लूज होगा ही. that knot would become slightly loose, because that is how it is been. Then अब मसल्स अगर मैं डायरेक्टली बोन पे अटैच करूं, they will also become loose. अटैचमेंट लूज हो जाएगा. ऐसा सोचो, ऐसा हाथ रखा है, इसको बाय बाय कर, सोचो ऐसा नेक पे अपन से रखते. Okay, because muscles loose है. That should not occur. So in that case, what is happening? These muscles are first gripped by the tendon. Tendon is nothing like covering onto the muscles. उसको clip कर देता है properly, and then that clip is anchored onto the bones, which will not make it loose. तो अपन ने बहुत बार देखा होगा, wires जो होते हैं, वायर्स के ऊपर अपन वायर का अपर पार्ट निकाल के उसके ऊपर क्लिप लगा देते हैं ताकि वो अटैच कर पाए.
Exactly something like this. Yeah, it is clipping the part so that it will not get loose. Another example is your I card. I card के ऊपर metal का clip है देखो पीछे की तरफ थोड़ा अरे ऊपर ताकि वो दोनों एकदम फिट बैठे. So no, something like that. The ligament, the tendons which are there, it clips it so that it becomes very tight onto the bone part. वरना the bones के ऊपर attachment lose हो जाएगा. That's what the function of. इसका एक ही function लिखना है आपको. तो एक ही है, पर एक ही line लिखना होता है. The tendons connect muscles to the bones and ligament connects bones to bones. Ligaments help the position of the bones, it restrict the position of the bone or movement of the bone. ऐसा नहीं जाता आपको. Okay, that because ligament doesn't allow it to overflex, whereas tendon are anchoring the muscles onto the bones. Clear with this part? Next is the third next part, which is nothing but bone and cartilage. Then ये connective tissue में just what we say as supportive connective tissue category में है. because दोनों support का काम करते हैं, supportive connective tissue made up of bones and cartilage. What are bones? अगर differentiate करना रहेगा तो क्या लिखोगे? Bones are rigid, cartilage are. ये कौन सा ऑब्जर्व होता है? Bones are rigid, smooth. Bones are rigid, cartilage are flexible. Okay, I hope flexible समझ में आता है. Okay, so if I cannot bend, then that is rigid. If I can bend, that is flexible. So bones are rigid, the cartilage are flexible. उसके अलावा yes, cartilage do not have blood vessels and nerves. Okay, so cartilage को कुछ भी करो दर्द नहीं करता है या ब्लड निकलता है. Simple example. ईयर पियर्स किया है, दर्द किया था, थोड़ा होगा. ऐसा एकदम दर्द किया था नहीं, पता भी है कि किया था, बचपन में किया होगा, अभी किया होगा तो पता चलेगा. पर then here it is not hurting. हाँ, ऐसे नीचे को थोड़ा दर्द करेगा because नीचे का स्किन पुल हो रहा है. But normally this is not paining so much. But if you keep your hand down, so हाथ रखो और उसके ऊपर में जंप कर दो. Okay, the entire building will come to you. Okay, क्या कुछ हुआ? Because the movement has come onto your bone. Bone का अगर थोड़ा हो गया, तो you will shout top of your voice. The अगले 3 महीने तो मुझको याद रखोगे. मेरे ऊपर जंप किया. Okay, so children, that's exactly what we say as bones. So bones are having nerves as well as blood vessels. Cartilage do not have blood and nerves. Cartilage are flexible. Bones are rigid. Cartilage do not have deposition of salts. The bones have deposition of salt. इसके लिए bone are and bones are porous. Cartilage are smooth. So this is the difference between a bone and a cartilage. The last one and the most important one, because बाकी पढ़ो नहीं पढ़ो इतना important नहीं है. But last one अगले साल वापस आएगा. Okay, it's a complete full-fledged chapter part. What is the last category? The last category is known as fluid connective tissue. Why the name fluid? Because it is fluid in nature. सब बाकी सब fluid है क्या? No, they are all solid in nature. But this is the only one which is fluid in nature. In that we study first one is blood. Blood को define ही किया जाता है as blood is a specialized fluid connective tissue made up of anybody else जिसका जीके अच्छा है? नाइन्थ में आए हो
क्या बोला मैंने? चुल्लू भर पानी में. Nice and children don't know what is blood made up of. शर्म आनी चाहिए. और good. Liquid component क्या है? Plasma. The blood is defined as a fluid connective tissue made up of plasma and cells. What is that cells? Somebody said, क्या? Platelets. तीसरा component, platelets. So RBC, WBC, and platelets. Erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. They are biological terms. So this is what the blood is made up of. What is the function of blood in your body? Transferring oxygen and nutrients. Transportation of oxygen, nutrient, respiratory gases, excretory products, vitamins, hormones, maintenance of body temperature, and at the end, also very important is it is transporting throughout the body, so it transports nutrient to all the parts of the body, and that is why connective. समझ में आया? हाँ ना. अब 5 मिनट दे रहा हूँ वो पढ़ने के लिए. चल lymph आपको है नहीं, but just for knowledge, lymph is a tissue fluid which is derived from the blood itself. Blood when filters out from capillaries, जब capillaries से blood बाहर निकलता है, it goes on to form a fluid known as lymph. Okay, madam, can you please share your book with her? And I want you to read the table. बुक में टेबल दिया हुआ है, पढ़ने आता है. तू इधर आ जा. पांच मिनट पढ़ने दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा. Anybody are not able to understand, ask. आंसर कर लिया तो तेरा था. What is annular tissue made up of which fiber? बुक में लिखा है इसके लिए. पढ़ने बोला तो पढ़ने पूरा हुआ कब ब्लड बोला फिर?
Then completed. अपने पास पूरा साल भर नहीं है पढ़ने के लिए। स्कूल में सेल और किसी का कुछ हुआ है कब? दो तीन वीक से नहीं है। मैंने कहा कि कमेंट कर दीजिए। नहीं सर हम मेडिकल इश्यू कर Okay. You might complete this chapter maybe by next lecture. You know, I'm with lecture ends at 5. Okay. So next lecture we'll complete this chapter. Small part left is epithelial tissues. Okay. It's easy to learn epithelial tissues, but it's difficult to learn the examples of epithelial tissues. Epithelial tissues नाम से पता चल जाता है. सिर्फ आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज क्यूबर्ड और ये पूछेंगे वेयर आर क्यूबर्ड टिश्यूज फाउंड होगा. तो इसका एग्जांपल लर्न करना टफ हो जाता है. Then by that we completed first 2 chapters. उसके बाद अपने पास options हैं. There is option that is we need to do is either we go with the most interesting chapter of your century, improvement in food resources. Okay. ऐसा ऊपर जाके सर लगता है कि जंप करने के लिए that chapter, या we go ahead with natural resources. Why do we fall ill? है और लास्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गन. अब डाइवर्सिटी शायद डिलीटेड हो चुका है, बट वी माइट स्पेंड 1 लेक्चर ऑन दैट. रीजन कुछ स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दूसरा आपके स्कूल में पढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, वो तुम्हारे टीचर्स के ऊपर है. दैट्स द बेस ऑफ बायोलॉजी. अगर आप भूले भटके से कभी बायोलॉजी लेने जाओगे, अगर मेडिकल वगैरह में जाने का इरादा है, तो वैसे भी पेशेंट को ऊपर पहुंचाने वाले हो, थोड़ा और जल्दी पहुंचाओगे अगर ये नहीं पढ़ोगे. सो इट्स अ बेस वी शुड नो एज अ बायोलॉजिस्ट और एज ए ह्यूमन बीइंग. कल तुम्हारे बच्चे ने तुम्हें पूछा मम्मी हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, डैडी हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, अरे ऐसे रिएक्ट करो ऐसे शादी नहीं करने वाले. So then you should be able to answer क्या we are human beings coming under mammals. Okay, our zoological name is so and so. So उतना पता होना चाहिए, इतना expected है. तो थोड़ा बहुत डाइवर्सिटी के बारे में just 1 lecture we spend. अगर किसी के स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है तो am I clear? And I hope the timetable has changed now. 4:30 का हो गया एक्चुअली में. I'll end it.
possibility.